Hi everyone, a very good evening to all of you. Please let me know in the comment section whether my audio and video is clear or not. I welcome you all to this Viewpoint 360 session that usually we do every Sunday at 9 p.m. But I already have a class scheduled for 9 p.m. so I'll be taking it up at this time at 7:30, right? So in this Viewpoint 360 session, what we do is we take up one recent topic which is in news, recent topic in news, or any kind of update or news we take up, and we make a question out of it. I provide that question to you, and in the next class I evaluate it for you live in the class, and I also discuss the model answer with all of you, right? I'm also sharing my telegram handle over here. Mannat educator is my telegram handle. If you guys want, you can connect with me over there. My WhatsApp channel link is also there in the Telegram channel itself. Okay. Good evening, Akanksha, Bhakti, Vibhuti, Suvam Datta, Satyarth, Prince. Good evening to all of you. I hope all of you are doing well. So the topic that I gave you, the question that I gave you was related to rupee depreciation. Right, let's take a look at the question that I gave you. First of all, I would like you to tell me in the comment section that what is the meaning of depreciation of rupee. I'm sure you have heard so many times the meaning of depreciation. You've heard the word appreciation of rupee. You might have heard the word devaluation. You might have heard the word you might have heard the word revaluation. है ना? So many times you might have heard such words. Good evening, Tanmay. So quickly tell me in the comment section what is the meaning of depreciation. And before I start, I want you guys to know that you can download this YouTube class PDF from the Olive Board app. Just go to the courses section and to the YouTube class PDFs folder. You can get the PDF from here. Fine. All those who do not have the app, then you can download this. I will share it with you on Telegram. Fine. I'll share the PDF on Telegram as well. So let's take a look at the question over here. The Indian rupee recently slipped past the 90 rupee per dollar mark. This is what we saw so many times on an everyday basis, making it one of Asia's worst performing currencies in 2025. What are the causes of rupee depreciation? What are its implications? Suggest methods to counter this. So you have to write this answer in about 600 words. So first of all, the first step that I always tell you is to highlight the keywords in the question, right? So what are the keywords here? Firstly, you need to know that yes, rupee has slipped the $90, 90 rupees per dollar mark. है ना? So we know that first highlight is the news. So you have to basically write the answer in the context of this news. Then you have to talk about causes of rupee depreciation. What are the causes? What are its implications? Now they're asking about the implications. So your implications can be positive implications. Your implications can be negative implications as well. So you have to write down both the positive and negative of depreciation. And then you have to talk about the measures to counter this. So maybe you can talk about RBI intervention or what all things can be done to counter this depreciation. So you had to write this answer. Depreciation is reduction in the value of the rupee based on market forces of demand and supply, decrease in the value of rupee as compared to dollar, net change fall in value of asset. ठीक है. So quickly let's understand the meaning of depreciation. To understand depreciation, I'm going to take up an example over here. ठीक है? What is the example? Say 1 US dollar is equal to how many rupees right now? Say it is equal to 80 rupees right now. If 1 US dollar becomes equal to 90 rupees now, what does this mean? Is that initially with 1 US dollar, the Americans they were able to buy 80 rupee worth of goods, but now with the same amount of money, they are able to buy more worth of goods. That means we can see that there is a fall in the value of the rupee. There's a fall in the value of rupee. That means now for Indians, if they have to buy $1, they will have to pay extra money to buy dollar. That means there is excess of rupee in the market and deficit of dollar in the market. है ना? किसी चीज की वैल्यू कब कम हो जाती है जब वो बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है ना?
ये बोलते हैं excess of everything is harmful, ऐसे करके बोलते हैं, तो excess में if rupees will be available in the market, that it will lead to depreciation of the rupee. So what happens due to depreciation is that now these Americans, they will be able to buy more goods from India. So positive of this is that now we will be able to export more to the US. So our exports will increase to the US, है ना? And what do we know? That aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M, or you can say net exports. है ना? So C plus I plus G plus net exports. So if your exports increase, your aggregate demand will increase. If aggregate demand will increase, then GDP will increase. If GDP will increase, national income will increase and economic growth will increase. तो ये implication तो हो गया. This is the positive implication. But the negative or the downside of this is that this is going to lead to an increase in the import bill. That means now you will have to pay extra to buy something from outside. And you know that India is dependent on imports for a lot of strategic minerals, for a lot of critical minerals. You know, India is dependent, for example, it is dependent on China for rare earth metals. It is dependent on so many countries for crude oil, for semiconductors, semicon chips. And so India, so in this case, import will increase. If import will increase, that means our imports, when import bill will increase, this will impact our trade balance also. It will impact our trade balance, and there is going to be a trade deficit in that case, balance of payment deficit in that case, right? So this is the downside of this. So you had to basically write all of these points in your answer. Fine, so this is what is known as depreciation. Now there's another term called devaluation also. You might have heard this devaluation term also. है ना? So when do we use this devaluation term? When we are talking about a fixed exchange rate system. So when we are talking about a fixed exchange rate system, we use the word devaluation when there is a fall in the currency. Depreciation happens in a freely floating market, है ना? Or a flexible exchange rate system, when there is flexible exchange rate system. And most of the economies right now, they follow this flexible exchange rate system only. That is why we use the word depreciation. India follows which kind of exchange rate system? Who is going to tell me in the comment section? India follows which exchange rate system as of now? Which exchange rate system is followed by India? Who's going to tell me? Good evening, Ayushi. Which exchange rate system does India follow? Yes, Satyarth, very good. India follows managed floating system of exchange rate. What is the meaning of managed floating? That yes, we are following a flexible exchange rate system only, no doubt. We leave everything to the market forces of demand and supply. Flexible exchange rate is when you leave everything to the market forces of demand and supply. है ना? But when I use the word managed floating means yes, we leave everything to the forces of market demand, market forces of demand and supply. But wherever it is required, we are going to manage it. RBI is going to intervene and manage if there is any extreme volatility and all. In that case, RBI is going to intervene. So we are basically only managing, not regulating the exchange rate. I hope this is clear to all of you. So the meaning of depreciation should be clear. Devaluation is in case of fixed exchange rate system. And I hope you guys know what is the fixed exchange rate system, where you peg the value either to gold, either to dollar. है ना? That is what we saw before. We had the Bretton Woods system of fixed exchange rate system. We had the Bretton Woods system and we had the gold standard. I hope you guys know about this. This is an important part of your syllabus. Right? ठीक है? And managed floating, which most of the economies are following as of now. I hope that this concept is clear to all of you and the major implications are clear to all of you. You had to write these things only in your answer. है ना? So how are you going to start your answer? You're going to start with the introduction part. In the introduction, you are going to maybe write in context of the news. You can write down. You can write down the definition of depreciation. What is the meaning of depreciation? है ना? You can briefly talk about that.
Then comes your body portion. In body portion, first of all, you're going to talk about the causes of rupee depreciation. Then you're going to talk about the implications. Under the implications part, you can talk about both the positive implications as well as the negative implications. And then you're going to talk about the countermeasures that can be taken up. At last, there is going to be a sound conclusion. Conclusion should be in way forward manner. It should be in a positive, it should end on a positive note. It should be solution oriented. This is how you have to answer your question. Now, let me check out the answers that all of you have given me. Just let me know whether the screen is visible or not. This is the first answer that I have, and the name on this was Nakli email, right? So I hope you are attending the class. Let me see your answer. So I hope the screen is visible. Please just confirm whether it is visible or not, everyone. Then I will quickly evaluate the answer. ठीक है. Okay then. So first, you've written the introduction that Indian rupee depreciation beyond 90 per US dollar marks a significant milestone in India's economic trajectory. This decline reflects both structural vulnerabilities and global macroeconomic shifts that have created headwinds. Okay, your introduction is good. It is crisp, clear, 3 4 lines, and that is how you have to write. Causes of rupee depreciation, you've mentioned some external factors, but you've written it, in a paragraph manner. See, your points are fine. Primary driver has been persistent strength of US dollar, reinforced by Fed's monetary policy stance. All these points should be written in points, or you can say sub points. It will be easier for the examiner to go through. Abhi it's paragraph, and I am also, not wanting to read this because it's in paragraph. Even though you have written good points, ki FPIs have withdrawn funds and all, but if you write in points, bullet points, it will be better. Okay? Then you've written domestic factors, very good. You have basically identified two factors, domestic and external factors. This division is absolutely correct. If you can write down in bullet points, it'll be better. Then implications, you've written negative impacts and you've written positive impacts. That is how I told to write down. And countermeasures, monetary and fiscal policy, structural reforms, trade policy measures, external sector management. Yes, all these points are absolutely correct. While rupee depreciation presents challenges, particularly regarding inflation and import costs, it also offers opportunities. So you have written a very diplomatic ending. All of you, please note this also, diplomatic ending, that you have written challenges but also opportunities. And then you've written kind of way forward, that a comprehensive approach combining prudent macroeconomic management, structural reforms, and strategic trade policies can help stabilize the currency. So very good introduction and conclusion is very very good. It's just that whenever you write the points, it's better you write down in bullet points. It will give your answer an edge, and everything is good. It's just that you have to write in points. Okay? Acha, this is Ayushi's answer, and Ayushi, you can see this is how I've received the answer. So maybe you can share your. I think you have shared your answer with me on Telegram. I will check it over there and give you the feedback. Okay. Next, we have answer of Satyarth. Let's take a Satyarth is also very consistent and has written almost every answer. Very good. Okay, so you've written that the Indian rupee has fallen by 6% in the year 2025, making it worst performing emerging market currency with future projections of rupee falling to this. ठीक है, this is fine, but you could have written a little. Satyarth, you could have defined depreciation a little bit over here. And in your introduction part, you could have written that what is depreciation. ठीक है, this is missing here. Causes of depreciation. You so please see that if you write bullet points like these, it is going to be better and easier for the examiner to read. So, huge outflow of foreign portfolio investors, impact of US tariffs, surge in gold and silver imports, Reserve Bank of India's shift in strategy, implications of. Acha. So, this is very good. Causes, fine. You've written around 4 points, and that too in crisp, clear manner. This is very good. Very good, Satya. Then implications, positive implication, it boosts exports, encourages domestic production, attracts foreign investment. Good. Negative, higher cost of imports, higher capital outflows, higher cost of debt servicing. ठीक है. Countermeasures promoting de-dollarization, measures taken by RBI. ठीक है, swaps and all you've mentioned. ठीक है, and promotion of exports FDI. Good. Satyarth, your answer is pretty good. Introduction, mein you can refine it a little bit. Introduction is not good, to be honest. Baki content part was fine.
RBI governor statement that central bank does not target any band for rupee in forex market allows for domestic currency to find its own correct level. Shows majority of Indian economy which has strong fundamentals to deal with rupee depreciation. ठीक है? But your conclusion, see, conclusion and introduction part of the previous answer was better, Satyarth, है ना? So introduction में you can add a little bit more context of what depreciation is, and conclusion also try to present everything in the conclusion. For example, you've written, जैसे you know in the previous answer it was written, yes there are challenges, yes there are opportunities, but this can be done. बाकी overall good. Then we have अच्छा Satyarth, again I've got the same answer. You have uploaded your answer twice. Then I have Bhakti's answer. Bhakti has also been very consistent, very good Bhakti. I have received almost every viewpoint. I have received your answer. Very good. Yes, Ayushi, but your file, I have shown you how your file looks like, है ना? So your file over here looks like this. So I cannot really read this, but I will definitely check it out in the Telegram, and I will give you the feedback after class. Okay, Ayushi? Okay, so I was talking about the answer written by Bhakti. Fine. So the Indian rupee recently breached rupee 90 per US dollar level, a psychological and economic threshold marking it as Asia's worst performing currencies. This marked a 5 to 6% depreciation. A weaker rupee affects inflation. ठीक है. Again, you could have again written the meaning of depreciation here. So Bhakti, you could have added the definition of depreciation here. Okay? Then causes strong US dollar, global monetary dynamics, trade deficit, foreign portfolio investors, market technical forces, uncertainty over India US trade deal. ठीक है? Implications, imported inflation. अब यहाँ पे भी implications में you could have written positives and negatives separately है ना, but otherwise ठीक है, imported inflation, impact on market and investment sentiment, higher cost for dollar denominated, export competitiveness, RBI's policy stance. ठीक है, but you could have divided it into positive and negative part. है ना? Then active foreign exchange intervention, reduce import dependency. ठीक है. Rupee slide beyond this is largely a manifestation of external shocks, sizable FPI outflows compounded by India's structural trade deficit, approximately 85% and pass through of exchange rate depreciation. ठीक है. With adequate foreign exchange reserves, RBI's market intervention and liquidity. थोड़ा सा भक्ति in your answers ना, there are little, you can say ग्रामर प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा ग्रामर इश्यूज हैं, थोड़ा सा फ्रेम सेंटेंसेस में जो आप फ्रेम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी गुड. अब जैसे यहाँ पे बिलियन को आप बीएन लिख रहे हैं, अवॉइड राइटिंग सच शॉर्ट फॉर्म्स. अब यहाँ पे एक्टिव फॉरेन एक्सचेंज एफएक्स इंटरवेंशन लिखा है आपने, फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, या तो फॉरेक्स लिखो, है ना, इधर राइट फॉरेक्स, है ना, एंड एफएक्स थोड़ा सा अवॉइड करो एकदम शॉर्ट ऐसे. ठीक है भक्ति, बाकी overall it is fine. बाकी methods में you could have written positives and negatives थोड़ा सा separately, but otherwise the presentation of answer and everything is good. Then I have Gyaneन्द्र's answer. I hope that you are here, Gyanendra. तो यहाँ पर है ज्ञानेंद्र का आंसर. इंडियन रुपी हैज फॉलन शार्पली, ब्रीच $90 पर this 90 rupees per US dollar mark, worst performing currency arising from global headwinds, although currency depression. देख लो भाई, ज्ञानेंद्र ने लिखा है करेंसी डिप्रेशन, तो ये वाली गलतियां नहीं करनी है. डिप्रेशन डेप्रिसिएशन का डिप्रेशन नहीं बनाना है ना. इट इज नॉट इनहेरेंटली हार्मफुल. पीरियड्स ऑफ शार्प एंड प्रोलॉन्ग डिप्रेशन पोज थ्रेट टू मैक्रो इकोनॉमिक. देखो तो डिप्रेशन डेप्रिसिएशन का डिप्रेशन नहीं बनाना है. ओके, एंड इंट्रोडक्शन को ठीक करो यार. दिस पूरा यू हैव रिटन दिस स्टेटमेंट इवन इन भक्तिज आंसर आल्सो आई थिंक, है ना. पूरा आपने वही जो क्वेश्चन में लिखा है वही यू हैव रिटन इट इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट आल्सो. इट शुड बी अ लिटिल डिफरेंट, है ना. थोड़ा डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा उसे डिफरेंट बनाओ. देन कॉजेस, ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. गुड, दिस पार्ट इज गुड, वेरी गुड. You have divided it into three parts. Positive implications of rupee depreciation, very good. Reduction in export cost, higher inward remittances, aggregate demand, ठीक है. Negative implication, very good. This part is very good, Gyanendra. Positive implications, negative implications you have written separately, very good. Measures to counter depreciation, you've written 3 points, and then conclusion that India follows managed floating exchange rate system where value of INR is largely demanded by market forces, is largely
Okay. Whenever in situations of excessive volatility, it becomes necessary for RBI intervention to bring exchange stability. A multi अब ये वाला पार्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन में सही रहता. You are not concluding the answer in this manner, है ना. थोड़ा सा कंक्लूजन थोड़ा वे फॉरवर्ड सा ही होना चाहिए है, पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहिए. इंडिया फॉलोज अ मैनेज फ्लोटिंग इज फाइन. थोड़ा सा बीच में से डाल सकते थे या स्टार्टिंग में इसको डाल सकते थे इन द पोर्शन, बट नॉट ओवर हियर. ठीक है. Baki, otherwise, Gyanendra, the content part is very, very good. Fine. Then we have Vibhuti's answer. Let's take a look at Vibhuti's answer also. तो आगे according to SBI Eco Wrap report, the Indian rupee breached psychologically important level of 90 per US dollar, marking fastest depreciations in recent years since the taper tantrum of 2013. क्या बात है, क्या introduction लिखा है ना. Quite different, exclusive, and report has been mentioned. तो अगर आपको याद रहता है in the exam, on the spot विभूति, तो very good. Since April 25, when US announced sweeping tariff hikes across several economies, rupee has weakened by 5.5%, reflecting. ठीक है. Fine, good introduction. यहाँ पे भी आप फिर भी वही depreciation वाला part थोड़ा सा लिख सकते थे in one line, but good introduction. विभूति, if you're attending the class, then good introduction, है ना? Good. कॉज ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन, फिर एक्सटर्नल क्या, आगे लिखो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल कॉजेस पूरा लिखना है, इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल कॉजेस. देन जस्ट वन सेकेंड, आई वाज ऑन विभूति's आंसर, है ना. ओके, एक सेकेंड. अच्छा, देन ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल में आपने डिवाइड कर दिया. फिर इम्प्लीकेशंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपने दोनों लिखा है, गुड. एंड मेथड्स टू काउंटर डेप्रिसिएशन यू रिटन 4 to 5 points. ठीक है, गुड. एंड फिर आगे आपका conclusion that despite rupee depreciation, India can maintain an edge by importing cheaper goods from countries like China while exporting to dollar markets. Acha. Strengthening export capacity, diversifying trade, and reducing oil dependence will improve external balance and ensure sustainable rupee. इंपोर्ट तो हमारे बहुत ज्यादा हैं चाइना के साथ ऑलरेडी, है ना विभूति. तो थोड़ा सा आपने इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है, हम चाइना के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना चाह रहे हैं. तो आपका ये जो कंक्लूजन में ये सोल्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा जो अभी तक जो हमारी आइडियोलॉजी है. वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस अपॉन चाइना, एंड आप कंक्लूजन में ये कह रहे हो कि हमें चीपर गुड्स चाइना से खरीदना चाहिए, है ना. तो ये थोड़ा सा वर्ड्स आपने ध्यान में रखना है कि क्या ये हमारी करंट पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी वेदर यू हैव टू राइट दैट इन योर कंक्लूजन और नॉट. Theoretically your concept is fine, theoretically you are absolutely correct that we can do this, but when you are writing it you have to be cautious because the current stance or foreign policy stance is that we have to reduce our over dependence on China. हमारा already बहुत ज़्यादा trade deficit है चाइना के साथ. ठीक है विभूति, तो जो भी आप सोल्यूशन दें, जो भी आप आंसर लिखें, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है करंट कॉन्टेक्स्ट में वेदर दैट इज सूटेबल और नॉट. Is that clear? है ना? Keep that in mind. Otherwise, very good. All of you have written very good answers. है ना? All of you have put in a lot of effort. I have received so many answers, which is a very very good thing. Good, all of you, all those who have written. If there is anybody else who wants to write an answer, Ayushi, I will correct your answer. I will provide you the feedback of your answer on Telegram. And all those who want to submit their answers have not submitted yet, you can connect with me on Telegram. ठीक है? Fine. चलो. Now let me discuss with you how I have written the answer, what can be your model answer. I'm again saying that model answer does not mean it is a perfect answer. It's just that you can write your answer in this manner and these points can be included. You can add all these points in your answer if you have not written them. ठीक है. तो चलो, so you can start your introduction that currency depreciation is a fall in the value of domestic currency against foreign currency under a market determined exchange rate system. तो आपने briefly एक line में you've written what is depreciation. It is opposite of appreciation, reflects excess supply or weak demand of domestic currency in forex markets, है ना. मीनिंग क्या है इसका, इंडियन रुपी रिसेंटली स्लिप्ड दिस 90 पर यूएस डॉलर मार्क, मेकिंग इट वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज इवन एज जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स रोबस्ट. तो आपने बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना. मेक योर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इन द सिंपलेस्ट मैनर, कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए है. ठीक है, सिंपल तरीके से लिखो. कॉजेस बताना है फिर आपने. सो फर्स्टली व्हाट आर द कॉजेस, कैपिटल आउटफ्लोज एंड एफपीआई सेलिंग. तो बहुत ज्यादा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है दे हैव सोल्ड देयर मनी एंड दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स सेफर एसेट्स.
है ना. These foreign investors, they have shifted funds from Indian markets to higher return AI and tech stocks abroad. So demand for rupee has declined in that case, and demand for dollars has increased. So dollar is appreciating, so rupee depreciated against the dollar. दूसरा हो जाएगा ट्रेड टेंशंस एंड टैरिफ्स. अब देखो कितनी ज्यादा ट्रेड में अनसर्टेनिटी है. यूएस इज पुटिंग टैरिफ्स ऑन इंडिया, 25% टैरिफ्स लगा दिए एंड कीप्स थ्रेटनिंग. यूएस इंडिया ट्रेड डील ही नहीं अभी तक फाइनलाइज हो रही. सो हायर यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स, अनसर्टेनिटी ओवर ट्रेड डील्स and global protectionism have weakened export prospects, lowering the forex earnings. तो इस वजह से भी दिक्कत आ रही है. ठीक है. देन वाइडनिंग करंट एंड कैपिटल अकाउंट प्रेशर्स. तो हमारे जो करंट और कैपिटल अकाउंट, हमें पता है ना दैट देयर आर टू अकाउंट्स, वन इज योर करंट अकाउंट इन योर बीओपी एंड वन इज योर कैपिटल अकाउंट. जो आपका करंट अकाउंट है, it deals with the recurring kind of transactions जैसे import and export of goods services. Capital account में when there is a change in the asset and liability, for example you know FPIs, FDIs and all. तो अगर crude oil costlier हो जाएगा, क्रूड ऑयल कॉस्टलियर हो रहा है बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल सैंक्शंस. यूएस इज पुटिंग सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल कि जो लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे हम सैंक्शंस लगा देंगे उन पे. एंड रशियन ऑयल पे भी सैंक्शंस लगा दिए कंपनीज पे. आई होप यू गाइस आर अवेयर ऑफ दैट. तो ऑब्वियसली अगर सैंक्शंस लगाए तो बहुत महंगा पड़ेगा. दैट इज व्हाई पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम देम. जो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल पीपल नहीं उनसे खरीदेंगे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना. फिर गोल्ड प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हैं विच इज लीडिंग टू ट्रेड डेफिसिट. उस वजह से हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है. ठीक है. फिर रिलेटिव इंटरेस्ट रेट एंड डॉलर स्ट्रेंथ. अब एक ये कह सकते हैं क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, बिकॉज डॉलर इज एप्रिशिएटिंग दैट इज व्हाई रुपी इज डेप्रिशिएटिंग. तो यूएस मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है. टाइट मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी. स्ट्रॉन्ग डॉलर एसेट्स दे अट्रैक्ट ग्लोबल कैपिटल. तो इमर्जिंग मार्केट करेंसी जैसे रुपी है वो बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव रहता है क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है. दैट इज व्हाई जो रुपी जैसा जो करेंसीज है ना, जो रुपी जैसे जो करेंसीज है वो इम्पैक्ट होते हैं. रिस्क सेंटिमेंट एंड जियोपॉलिटिक्स. ऑनगोइंग वॉर, सैंक्शंस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी पुश इन्वेस्टर्स इनटू सेफ हेवंस. अब जब इतनी ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगी तो सब लोग शिफ्ट किस पे करेंगे? सेफर एसेट्स पे, सेफर करेंसीज पे जैसे यूएस डॉलर एंड गोल्ड. तो रुपी पे प्रेशर फिर बढ़ेगा. सो 4 to 5 points you could have written under your causes of rupee depreciation. Then comes the implications. So implications, सबसे पहले you can talk about the positive ones. That what are the potential benefits? So like I told you that exports are going to become cheaper. हमारे exports बढ़ जाएंगे. So export price competitiveness. Weaker rupee can make Indian exports cheaper. तो हमारे exports बढ़ जाएंगे. So aggregate demand बढ़ जाएगी. Economic growth बढ़ जाएगी. So that is a positive thing. Substitution away from imports. Costlier imports may push firms and consumers towards domestically produced alternatives. अब अगर हमारा import bill बढ़ने लग जाएगा, अगर हमारे imports महंगे हो जाएंगे, so Indians what will they say? यार हमने बाहर से import ही नहीं करना, let's buy domestic goods only. तो जो हमारी domestic production है वो enhance हो जाएगी. तो ये भी एक positive है ना. अच्छा, तो आपने ये लिख दिया positive implications. फिर risks and costs क्या है, negative implications क्या है? Imported inflation, कि हमारा जो import bill है it is going to be costlier. Higher rupee cost of oil, gas, fertilizers, electronics, edible oils, gold, ये सब हमारा हम import करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे. import महंगे हो जाएंगे तो हमारा जो trade deficit है वो ज़्यादा हो जाएगा. it will lead to inflation also, है ना. it will lead to inflationary pressures also. वो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा वर्सन हो जाएगा. एक्सटर्नल वनरेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी बिकॉज इंडिया इज नेट इंपोर्टर. इंडिया इज नेट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी एंड कैपिटल गुड्स. तो और अगर इंपोर्ट जो वॉल्यूम्स है अगर वो गिरे नहीं, इफ दे डोंट फॉल, करंट अकाउंट डेफिसिट कैन वाइडन. फिर उसके अलावा बर्डन ऑन एक्सटर्नल डेट एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट. ऑब्वियसली जो फर्म्स और जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो क्या करेंगे, डॉलर, जिनके पास डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स है, जिन्होंने लोन्स लिया है डॉलर में, उनके लिए बहुत नेगेटिव होगा. उनके लिए जो रीपेमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगे. फिर मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और वॉलेटिलिटी की वजह से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, है ना. सो नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट द रुपी और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कम हो जाएंगी. तो आपने 2-3 पॉइंट्स में लिख दिया जो पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं. अच्छा, अब अगर ये रुपी डेप्रिशिएट तो हो गया, लेकिन इसके कुछ काउंटर मेजर्स क्या है जिससे वी कैन काउंटर दिस प्रॉब्लम. सबसे पहले तो आरबीआई की प्रूडेंट इंटरवेंशन इज वेरी वेरी नेसेसरी. आरबीआई को पता होना चाहिए कि आरबीआई कब इट इज ट्राइंग टू
इंटरवीन, कब उसे इंटरवीन करना चाहिए. सो आरबीआई स्मूथ यूज फॉरेक्स रिजर्व्स टू स्मूथ वॉलेटिलिटी. तो जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हैं, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स. तो जो ये फॉरेक्स रिजर्व्स है, इनको यूज करके हमें वॉलेटिलिटी को कम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए. स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट में आपको इंटरवीन करना चाहिए आरबीआई को. तो आरबीआई को बहुत ज्यादा सोच समझ के इन अ फ्यूचर फॉरवर्ड ओरिएंटेड मैनर उसको, आरबीआई को डिफेंड करना है रुपी को. इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट. तो रेट हाइक्स एंड टाइटर लिक्विडिटी कैन मेक रुपी एसेट्स मोर अट्रैक्टिव. अब डेप्रिसिएशन का मतलब रुपी बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो रुपी को कम करो, फिर रुपी की अवेलेबिलिटी को कम करो. आरबीआई को एब्जॉर्ब करना चाहिए है रुपी को, ताकि जब रुपी की कमी हो जाए तो उससे क्या है, रुपी भी अप्रिशिएट करेगा फिर. तो ये करना चाहिए है ना. देन इंसेंटिवाइजिंग फॉरेक्स इनफ्लोज. हमें जो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज आने, यानी कि जो कैपिटल इनफ्लोज है, जैसे एनआरआई डिपॉजिट्स हैं, बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं, हमें उनके लिए इजी बनाना, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हैं. जैसे उनको टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दो, इंटरेस्ट सबवेंशन काइंड ऑफ उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो. लोकल करेंसी के यूज को वी शुड डीपन, है. लोकल करेंसी शुड बी यूज्ड इन ट्रेड. एनकरेज आईएनआर इनवॉइसिंग इन बायलेटरल ट्रेड. तो बायलेटरल ट्रेड जब हो रही है, आप जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, हम रुपी में डिनोमिनेट कर रहे हैं, जैसे यूएई के साथ हम रुपी में एक्सचेंज करते हैं, है ना. तो वो हमें करना चाहिए. वी नीड टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ना चाहिए. वी नीड टू इन्वेस्ट इन आर&डी, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, पावर स्केलिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. इन सब में इन्वेस्ट करो. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोना बी बेटर. And at last, you can conclude the answer by saying that currency depreciation, it can briefly boost export competitiveness. तो पहले आपने क्या लिखा, positive, it can boost export competitiveness. लेकिन prolonged weakness, तो आप इसमें negative side भी बता रहे हो. Prolonged weakness fuels inflation, heightens external risk, strains the economy. फिर आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिए. फिर आपने क्या बताना है, सोल्यूशन. दैट इंडियाज ट्रेड स्ट्रेंथ मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम हायर प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, है ना. डेप्रिसिएशन शुड रिमेन अ शॉर्ट टर्म मेजर while policy prioritizes a stable and credible currency. तो आपने एक पॉजिटिव नोट पे आंसर को एंड किया, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से अपने आंसर को एंड किया. तो आपका स्ट्रक्चर यही रहता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. बस आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि दैट व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द आंसर. I hope that you guys have understood how to write the answer, कैसे आपने अपने आंसर को फ्रेम करना है. So whenever you guys write the answer ना, पहले please read about the topic. अलग अलग साइट से रीड करो, थोड़े न्यूज़पेपर आर्टिकल से go through करो, and then try to write an answer. Try to understand the meaning of the question being asked. अपने concept की clarity करो. जब भी आप कुछ भी लिखने चाहो, first you have to do the static portion. Depreciation क्या है, उसकी implications क्या है, importance क्या है depreciation. अच्छा, फिर जो devaluation से कैसे अलग है, types of exchange rate क्या होते हैं. तो हमने आपने ऐसे ऐसे करके पूरा रिवाइज करना है अपना आंसर. ठीक है. सो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट व्यू पॉइंट 360 सेशन. ठीक है. आप अपना आंसर लिख के, देयर इज गोइंग टू बी अ गूगल फॉर्म. गूगल फॉर्म का लिंक विल बी अवेलेबल 2-3 days के बाद. आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस, इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस क्लास. या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते. अगर आपको लिंक नहीं मिला तो टेलीग्राम पे भी वैसे आई कीप शेयरिंग द लिंक. तो मन्नत एजुकेटर है टेलीग्राम हैंडल. अगर आप चाहो यू कैन कनेक्ट विद मी देयर. वहाँ पे मैं लिंक सेंड कर देती हूँ बिफोर द सेशन, सो दैट यू गाइस कैन पुट योर आंसर देयर. ठीक है. So for your next class, I have this question on board. Please take a look. India is preparing to submit its next round of climate commitments for 2035 horizon. अब ये climate commitments क्या है? NDCs, Nationally Determined Contributions. अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने पेरिस अग्रीमेंट को पढ़ना है. अच्छा, अगर आप पेरिस अग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आपको उससे पहले क्या पढ़ना है, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है. क्योटो प्रोटोकॉल में यू हैव टू रीड अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल में यू हैव टू रीड अबाउट CBDCs. अगर आपको CBDCs, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड कमिटमेंट्स, और CBDR, सॉरी, है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपको CBDRs के बारे में पता होगा तो ही आपको पता चलेगा कि ये NDs, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं. तो आपको इसके बारे में पढ़ना होगा पहले. तो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, कि हर कोई नेशन अपनी क्लाइमेट कमिटमेंट्स खुद बनाता है कि अच्छा हम यहाँ अब तक हम ये रिड्यूस करेंगे, ये कार्बन एमिशन इतना हम रिड्यूस करेंगे. तो जो हमारा नेक्स्ट राउंड है 2035 हॉराइजन के लिए, फॉर द नेक्स्ट 5 years,
और ये मतलब जो 2035 तक के लिए जो हमारा नेक्स्ट एनडीसीज है वो हम लेके आ रहे हैं, इंडिया प्रिपेयर कर रहा है और सबमिट करने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर एनडीसीज, तो आपको क्या होना चाहिए, यू नीड टू नो व्हाट आर एनडीसीज, व्हाट आर इंडियाज करंट टारगेट्स। अब आपको करंट टारगेट्स भी पता होना चाहिए कि अभी क्या है। हाउ हैज द कंट्री परफॉर्म्ड, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी, अगर हमने टारगेट्स बनाया है क्या हमने उन टारगेट्स में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, क्या हमने कुछ उसमें 2 या 3 अचीव किए हैं या नहीं, चाहिए हमारे टारगेट्स रियलिस्टिक है या नहीं है, वो आपको पता होने चाहिए। Discuss the challenges in achieving the climate goals, and whenever challenges are asked in the question, तो आपका way forward तरीका, वे फॉरवर्ड आपका साथ ही होना चाहिए है, यानी कि आपका जो सोल्यूशन है वो साथ ही होना चाहिए है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चैलेंजेस और उसके बाद वे फॉरवर्ड कि अब हमें क्या करना चाहिए है, दिस यू हैव टू राइट डाउन। So try to write an answer related to this and share your answer with me on Telegram, or you can share your answer with me in the Google form link. Fine? ठीक है जी। तो और ये आंसर लिखने से पहले पहले आप स्टैटिक का पढ़िए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस अग्रीमेंट क्या है, सीबीडीआरस क्या है, आपके एनडीसीज क्या है, उसके बाद ही आपको ये आंसर लिखना है। ओके, रीड अबाउट जो करंट आपके एनडीसीज हैं वो टारगेट्स क्या हैं, उसमें से आप ये ढूंढें कि इसमें से हमने क्या अचीव नहीं किया है। जो हमने अचीव नहीं किया है वो उसके आप चैलेंजेस बताएंगे, जो आप चैलेंजेस बताएंगे जो हमने अचीव नहीं किया है वही चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए आपका सोल्यूशन भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपने अपना आंसर लिखना है। ठीक है, सो रीड अबाउट दिस, ट्राई टू फ्रेम द आंसर इन योर माइंड एंड देन ट्राई टू राइट द आंसर। ठीक है, फाइन। You can also join, all those who want to join this regulatory super elite pro, this has been launched wherein you will get RBI NABARD books, all batch access, live classes, notes and magazines, mocks, previous year papers, everything will be available. There's a one plan for all the regulatory examinations, so if you guys want you can join this. And if you are specifically preparing only for RBI grade B 2026, you can take up this course also. We are going to launch this batch 2, we're going to start off with batch 2 classes also very soon, so you guys can attend, you guys can join this course. ठीक है, तो you will be available, you will be getting ESI and FM classes, QRE, GA classes, books, magazines, mock tests, current affairs, everything will be available. So that is all from my side. Thank you so much everyone. Please let me know whether everything is clear to you or not. If there is any doubt, you can ask me in the comment section. I hope that you enjoyed the session. इसी तरह से we are going to keep bringing up answer writing session because it is very very important for you from your exam point of view. ठीक है, तो इसी तरह से आपने आंसर राइटिंग कर रहा है। ठीक है, एंड आई होप दैट दिस इज हेल्पिंग यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप स्टडिंग एंड अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। वील मीट अप इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ओके भक्ति, Satyarth, Vibhuti. All right. Everything clear? That's great. If everything is clear, great. Okay, Sharma ji ka beta. Take care, everyone. Have a good night. I will see you all in my next one. Bye bye. Bhakti, I will be not taking. Okay, everyone, I will be not. I will not be taking the live mint analysis class because I'm just available for the next 2 days. उसके बाद I am taking a week off due to medical reasons. ठीक है? I will be taking a week off due to medical reasons. So from Wednesday, I will not be available. So there was no point of taking the class right now. But whenever you want, you can always send me the articles and everything. After 1 week, another week, I'm going to resume with the sessions. ठीक है? So I'm going to resume with your live mint analysis. Till then, I want you guys to read the newspaper on your own. Try to understand the articles. Whenever you feel there's a problem, you can connect with me. Okay? Fine. ठीक है? हाँ. So once everything is over, I will be resuming everything. ठीक है? I was supposed to take this week off, but uh, there was some change of plans and everything got postponed. That is why I took 3 4 classes right now, and I'll be available for the next sessions after a few days. Fine? ठीक है? All right, thank you and have a good evening. Bye bye.